The vision of Bait-ul-Sukoon is to help prevent cancer, provide services to underprivileged, afflicted members of our community to fight cancer in tranquility. We provide cancer services to poor persons without bias to caste or creed. Bait-ul-Sukoon Hospital was set up by a Bait-ul-Sukoon Trust, and it was a dream of the managing trustee and the other co-trustees at that particular time to come up with a hospital which could take care of patients who are critically ill, who have very little chance of survival, but they need pain management, and those are the hospice patients. So what we did, we set it up in 1999 as a hospice. Either in the form of treatment or pain management. Originated as hospice care for the poor, Bait-ul-Sukoon has grown into an institution that provides palliative as well as curative treatment. For the underprivileged, it is a place full of hope and gives respite from a disease that affects not just the patient but the family. बैतुल-सुकून में जो है पेशेंट के एंट्री का ये तरीका ये कि जो भी गरीब पेशेंट होते हैं और ये पेशेंट का जो इन्फ्लक्स है हमारी तरफ आता है वो ज़्यादातर औरंगी, कोरंगी, लियारी, इसमें जितने गरीब मरीज़ हैं बाज़ औक़ात तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्टेशन भी अपना करा सकें। हम स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक के पेशेंट के लेते हैं, एनी एज पेशेंट, बट ओनली हम चूँकि बच्चों का कैंसर हम ट्रीट नहीं करते और ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर नहीं ट्रीट करते हैं। इसके अलावा तमाम कैंसर जो गरीब मरीज़ हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनकी तमाम सहूलियात को मुहैया करते हुए उनके तमाम ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं। मेरे होठ पे आज से 3 माह पहले जो है ना वो ज़ख़म हुआ छोटा सा, तो मैं हॉस्पिटल गया, उन लोगों ने ऑपरेशन का कहा और 8-10 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया। ज़्यादा मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, मैं जावेद मलिक के पास गया, तो वो जावेद मलिक साहब यहाँ लेके आए, उन्होंने कहा कि बगैर ऑपरेशन के आपका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। Bait-ul-Sukoon provides for the poor the only respite from their sufferings, a place where they can get excellent medical care for treatable cancer from radiology to targeted therapy. Hosting a wide array of services, Bait-ul-Sukoon provides the underprivileged with chemotherapy treatment services, radiology, hormonal therapy, targeted therapy, mammography, and surgical oncology. हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट बहुत दूर से आते हैं, जैसे बलूचिस्तान के, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत दूर दूर इलाकों से आते हैं। This hospital is providing treatment facilities, both radiation as well as chemotherapy and diagnostic facilities. 3 साल पहले मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर हुआ, ये कि मुझे वोमिटिंग होती थी बहुत, कुछ खाया वगैरह नहीं जाता था, कुछ भी खाता था तो वो उल्टी होके निकल जाती थी। वो एक जगह ट्रीटमेंट हुई तो अब सर्जरी हो चुकी थी एक, तो पता चला कि ये हमें है डिजीज़, तो फिर इसके लिए फिर हम काफ़ी जगह गए, कई अस्पताल में गए, वहाँ पे काफ़ी पैसे मांग रहे थे लेकिन हम इतनी गुंजाइश नहीं कर सकते थे। किसी जानने वाले ने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में एड्रेस बताया तो फिर हम यहाँ आए। यहाँ पे मेरा तकरीबन डेढ़ साल यहाँ ट्रीटमेंट हुई मेरी और बहुत अच्छी हुई। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ बहुत, इट्स वेरी गुड। मेरा नाम शैला तालिब है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने जावेद मलिक साहब का नाम बहुत सुना था और उनकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, सो मैं उन जावेद मलिक के पास आई। यहाँ मेरा 6 केमो हुआ है और यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे लोग हैं। We have a dedicated staff that not only treats the patients with the best possible medical care, but is dedicated to providing them with respect and dignity through a disease that robs them of this. Our doctors and nurses provide round-the-clock treatment with curative cancer. Bait-ul-Sukoon has a wide array of in-house facilities like its own pharmacy, psychological counseling, and much more. But what about the ones that cannot be cured? Often we forget that the dying need as much care and respect as the ones that are living.
I visit all the patients who are admitted at Bait-ul-Sukoon on alternate days, and whatever are their medical problems, then I consult them. मैं जब से बैतुल-सुकून में आई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत फ़ायदा हुआ है। ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा था, वो भी भर गया है। ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, मगर यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह से इतने इखलाक से बोलते हैं कि मरीज़ की आधी बीमारी तो खुद ही दूर हो जाती है। Even death demands dignity. Bait-ul-Sukoon provides its patients with palliative treatment so that they can leave this world with their heads held high. A well-wisher came forward and he donated the plot of land to us, and this plot of land then was used to construct this hospital where we are today. The hospital has been set up with all the facilities, including the diagnostic facilities and the facilities for the patients in all respects. The accounts of the trust are audited by one of the big four auditing firms, and the accounts are placed on the websites. So we have a very transparent system within the hospital, and the trust manages on that basis. What we have a problem is not the demand which is there in the marketplace to take care of the patients. The problem and the constraint which we have is the funding available with us to handle the number of patients who require number of services and number of therapies or care. But to do that, we have to look into various modes of raising the funds. We have a number of donors who are regularly donating to the trust, but the needs are going up. The costs of the treatment are increasing day by day, and what we need is the sponsorship of either a patient, a sponsorship of a bed, or sponsoring a surgery. All that is given in our leaflet, and we would like you to please help us so that we can help those who have very little hope in this world. With your help, these people can have a future with possibilities, a future that is cancer-free.